Thank you, Sam. Behind every successful man, there is an astonished mother-in-law. Chicago has proved to be Ifti's mother-in-law because every time news of his national and international acknowledgement reach Chicago, they behave completely surprised. Tonight, we are here to set the record straight and to finally pay long overdue tribute to our local hero, Ifti Nasim. Much is being written and said about Ifti as a poet and a writer. He is not only accepted as one of the foremost poets of Urdu today, but his latest book of short stories has been applauded for its ingenious and imaginative content, establishing him as a very serious prose writer also. I want to say a few words about Ifti as a person and Ifti, my friend. Born to a scholarly, intellectual, poet, writer, journalist father, Ifti has had the privilege of going to some of the best academic institutions, both in Pakistan as well as the United States. Being an outstanding student right from the beginning, Ifti was charged in school to take care of one of the duller students and coach him after school. Ifti took his charge very seriously and started spending every afternoon going to this child's home and trying to educate him and trying to impart some of his knowledge. Interestingly, it turned out that this little child came from a family of singers and nach girls. And here is Ifti, a 13, 14-year-old boy who started to spend long, lazy afternoons coaching this kid in the company of these nach girls. Thus began, I think, his lifelong compassion for the oppressed, the tabooed, the so-called people who have been branded with the scarlet letter. Interestingly, I think that the lesson which Ifti learned was quite unique, because what his philosophy became was that not only should you try to comfort the afflicted, but you should try your best to afflict the comfortable. Blaise Pascal, the famous French philosopher, has said that one never does evil quite as well, as cheerfully, and as absolutely as when one does it out of conscience. Ifti recognized that the persecution of homosexuals is the prime example of this sort of rule, and decided to wage a struggle not only to get this ostracized community accepted by society, but decided to hit at the very heart of the problem, that is, at the conviction of the high-handed moralists. The weapon he chose for his struggle was potentially the most lethal and the most effective, that is, his pen. He knew the struggle would be bad, and I'm going to quote a few lines from Faz now, because that has been Ifti's policy. हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे. हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे. हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी. हाँ, अहले सितम मश्क़ सितम करते रहेंगे. मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा. मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा. दम है तो मदावाए सितम करते रहेंगे. Humans have gone from being barbarians to being modern, forgetting to be civilized in the middle.
Ifti is a rare exception. He is more civilized. He's campy, responding as Susan Sontag would say, to the markedly attenuated and to the strongly exaggerated. To him, what is most beautiful in men is something feminine, and what is most beautiful in a feminine woman is something masculine. Just like Oscar Wilde, for him, style is the ultimate morality of the mind. He believes, just like Oscar Wilde again, that either one should be a work of art or wear it. And you will witness that in a moment. Ifti's combination of oxymoronic appetites never fail to amaze me. He is the kindest, the funniest, the most generous, exceptionally intelligent and well-read, incredibly chic, highly intelligent, exquisitely sensitive, profoundly compassionate, impeccably, singularly gay person I know. My relationship with him is rather schizophrenic. It ranges from complete adoration to, and again, I'm sorry for my American friends, I have to resort to Urdu. मज़ा हो हश्र में दोनों हो बिन बुलाए हुए, हम उनके साथ में हो नाम बेबताए हुए. मज़ा हो हश्र में दोनों हो बिन बुलाए हुए, हम उनके साथ में हो नाम बेबताए हुए. खुदा के आगे सवालों जवाब से पहले वो पूछें कौन हो तुम, हम कहें सताए हुए. The two things, however, which never waver are my deep respect and strong friendship for Ifti. I would like to introduce him to you now in the words of the famous Urdu poet Sahir Ludhianvi's unforgettable lines. ज़ख्म खुर्दा हैं तख़य्युल की उड़ाने तेरी, तेरे गीतों में तेरी रूह के गम पलते हैं, सुरमगी आँखों में यूं हसरतें लौ देती हैं, जैसे वीरान मज़ारों पे दिए जलते हैं. इससे क्या फ़ायदा रंगीन लिबादों के तले, रूह जलती रहे, घुलती रहे, पजमुर्दा रहे. होंठ हंसते हों दिखावे के तबस्सुम के लिए, दिल गमे ज़ीस्त से बोझल रहे, आज़रदा रहे. दिल की तस्कीन भी आसाइश हस्ती की दलील, दिल की तस्कीन भी आसाइश हस्ती की दलील. जिंदगी सिर्फ ज़रो सीम का पैमाना नहीं, ज़ीस्त एहसास भी है, शौक भी है, दर्द भी है, सिर्फ अनफास की तरतीब का अफसाना नहीं. उम्र भर रेंगते रहने से कहीं बेहतर है, उम्र भर रेंगते रहने से कहीं बेहतर है, एक लम्हा जो तेरी रूह में वुसअत भर दे, एक लम्हा जो तेरे गीत को शोखी दे दे, एक लम्हा जो तेरी लय में मसरत भर दे. Ifti, that lamha, that moment arrived for you in the words of Narman and Ghazal and now Ek Thi Ladki. We hope that you continue to blossom in the future at the same rate. We are proud of you and we are gathered here to acknowledge your laudable achievements. Ifti Nasim. Ladies and gentlemen, and Shiban. Four things I am always afraid of: prejudice, poverty, sickness, and Nancy Reagan. I mean, you must be thinking, what is this? Why Nancy Reagan? My friend Sam just talked about it, and he said about the international relation. Imagine if somebody asked a woman who's a president's wife, what do you think of the international relationship with Red China? And she answered, oh, I favor Red China, not with the yellow tablecloth. So that's what we went through. Excuse me, that's what we went through in life. Reagan
Reagan has such a policy that every time you talked about homosexual, about AIDS, he right away start looking on the other side like things does not exist. Yes, we are the people of shadow. We does not exist. We get married back home. You tell your mother or father, Dad, I'm gay. I like guys. I like men. Oh, get married, you'll be okay. God damn, it's some kind of disease. You think this is a cure? What are we talking about? And forget about men. I'm a man. Maybe I love women too. Okay, I'm sorry. Probably I am a straight man trapped in a gay man's body. Or maybe you can call me a part-time lesbian. Whatever it is. But the whole thing is, when we talk about some very serious issues, and that's become human rights, suddenly we start thinking about reproduction. What is going to happen if all you guys started, what, we all start screwing each other? That's what you're talking about? Honey, it's never going to happen. There will be always some people who are straight, and, nobody's perfect. So we tell you in a way that it's never going to happen. Nature has given a certain amount of ratio and certain amount of work to do. Straight people are there to reproduce. We are there to make this whole world a colorful and peaceful world. So what I'm trying to say is that, it's not the question. Actually, Shakespeare wanted to say was this, which they cut the word out of it, to be gay or not to be gay. That is the question, which they obviously took out that word, and now we are here. And in all of this conversation, I would like to really, really thank you to Barbara and Meryl, who are sitting right there, because they have to tolerate my Urdu poetry, which I'm going to read. I mean, there's a lot of people here who cannot understand Urdu, but I will, for their convenience, read my English poetry, and then after that, I'll read Urdu, okay? And I got a Salman here sitting with Purnima. Salman, stand up, please. Salman Akhtar is brother of Javed Akhtar. And he's visiting, and we want to thank you. And Purnima is there. And Yunus Ejaz, kahan hai? He's also a very good poet from Pakistan. He's visiting here. And of course, my Sangat people are sitting there back there, trying to buck me up and say hello and all that kind of stuff. And I want to really thank you, everybody. And now, Azra was talking about, I like the femininity in the men and women who are slightly mannish, okay? She's absolutely right. Because I'm a more man you ever gonna be, and I'm a more woman you ever gonna get, honey. So, fasten your seatbelt. It's gonna be bumpy tonight. I'm gonna read few of the things which the people who has got a very delicate morals and very, sort of thing, they might not like it, okay? But please, this is my evening, and I wanna do whatever I wanna do. Eat your heart out. My first poem is called -0. I wrote it for Allen Ginsberg. I love that woman. Touch me, touch me, touch me, my God, and my God in her male drag, perched in the gilded chair on top of Dugan's bistro, all the worshippers, high on drugs and alcohol, sniffing poppers, and down on their one-night stand, worshipping on the hymns of Shalamar, second time around, better than the first time, would not even live to see their first time, because morning is cannibal. And my God in her male drag, shipping all the outlaws and lepers to the United States of America, go where you belong to,
and live in Spanish Harlem or Humboldt Park, there is no purgatory for thee. And United States of America, like a Cambodian mother of both people's children, let them suck her bosom, which has already been dried out. Dreamers and the dream merchants, all at one place, celebrating a taste of Chicago, and the world on the south side of river is starving to death. Our heroes are trembling in front of windmill of nuclear waste, and Sancho Panza is smiling. A wino on the Skid Row is dreaming for flowers. A homeless person is yearning for a barbecue. Blacks are bleaching their skins. White are suntanning at the Oak Beach. And John Hancock is peeping over them like a virus looking for a quick release. Thank you. Something never changed. Nigger, sand nigger, camel jockey, etc., etc. I was called many names. I could not change the people, so I changed myself into a complete American. A conscious effort. But after all those years, it's still the same. Only the words have changed. Now they call me sissy, faggot, pansy, cupcake, cocksucker, etc., etc. A middle-aged, okay, remember which was a terrible act of terrorism in Omaha when the building was blown away? And even Hillary Clinton's husband, Bill Clinton, said there was a Middle Eastern looking man who came and blew up the building. Okay? This poem is right, in that perspective. A Middle Eastern looking man. I've been called nigger, sand nigger, camel jockey. I've been depicted as a terrorist in the newspaper and Hollywood movies. Animal causes are treated more humanly than mine. I know this is a free country. Everybody has a right to hold his opinion, but I, the most understood one, wonder about, have you ever heard azan from the minarets in the calmness of the evening? Or have you ever heard the whisper of muazzin in the deep morning sleep? Wake up. Waking up is better than the sleeping. Do you know the meaning of assalamu alaikum? If you don't know, then with all due respect, I would say, you have no right to have an opinion about me. An autumn montage. Yellow leaves are peeping under the green branches like the gray roots of the black hair colored long time ago. Sun is shining on the newly manicured lawns. Lake Michigan is shining like a mercury. An old black man is thinking of the heat bill. A white man is trying to get a job before it is too cold to go out to hunt for a job. Rich are leaving for Florida or California. A Pakistani cab driver is driving them to the O'Hara airport. Devon Avenue is smelling of curry, and windows are displaying the mannequin of white girls wearing saris. Downtown is reeking with the fear of another flood and returning of Jane Byrne as mayor of Chicago. Lakeshore Drive is calm and quiet, but how long? Snow is around the corner. A poem without any name. Darkness around my soul, searching for the light with the flashlight of Old Testament towards the sky. SOS, but no one comes to save me. Long since the prophet stopped coming down to earth, it's too risky. We have to cross the Bermuda Triangle, and that ain't easy. One of the leftover prophets said, sitting in Central Park, you are on your own now. Chaos, anarchy, paranoia, life is what you made out of it. No deposit, no return. Ladies and gentlemen, this was my English version of my poetry, which I think and how I write. Now, I'm going to read some of my poetry from my book, Narman, which is in Urdu. So please forgive me who can speak Urdu but can't understand Urdu. And those who understand Urdu and they don't like my poetry. Ijazat hai aapse? A gay person
There's no translation. Urdu is such a pure language, such a holy language, you cannot say anything in it, and you cannot talk about anything humanly possible, which you always have to talk. Very pure, okay? So, but that's why I could not get that word, word for the person who's homosexual, who likes men, and who go out with men. And in America even, the word gay is actually a substitute for the homosexuals. Faggot is the word which they used to call people, because long time ago in 1600 in Salem, Massachusetts, they used to burn the witches and the homosexuals. And the wood the wood was called faggot. So they start calling the gay people fag, okay? So, but in 1972, they changed that word to gay. Because in Hollywood, they always show gay person, homosexual person, depressant, chronic depressant, and suicidal, and good for nothing, pedophile, you know. And he always, what do I have to do with, what a gay person, a homosexual have to do with the child? I don't want a child to make love to. I'm not a Michael Jackson. Don't even talk about that bitch. She gave the worst name to homosexual society, okay? And that's why they changed the word to gay. That was actually a substitute. Gay means happy. But what is there to happy about? That's what you make life, whatever your life is. So, Bulughat, the name is called a gay person. Bulughat ke is मोड़ पर मैं अकेला खड़ा हूँ. मेरी कोख भी मुझसे बाहर किसी और के जिस्म में है. मैं कुछ इस तरह अपने नादादा तिफ्ल लोरी सुना के सुलाता रहा हूँ. मेरे गीत फितरत का नौहा बने हैं. कोई भी किताब मुकद्दस मेरे वास्ते अपने औराक में कोई लफ्ज़ मोहब्बत दिखाती नहीं है. मुझे कश्फ है अपनी फितरत की गहराइयों का. मुझे कश्फ है अपनी रातों की रुसवाइयों का. मुझे कश्फ है इन उजालों की परछाइयों का. मगर मैं अज़ल से अबद तक का मलून व मतून खुद अपने ही हाथों से अंदर के कैदी पे पथराव करता रहा हूँ. मेरे सारे हम उम्र मुझको बलूगत के इस मोड़ पर छोड़कर जा चुके हैं. अकेला मैं उस शख्स का मुंतज़िर हूँ जो मेरे कबीले का होगा, जो इसरार जानेगा मेरे बदन के, मेरी रूह के हर निहा खानों के रास्तों पे चलेगा. मुझे अपने चेहरे पे कोई मखूटा सजाने की ख्वाहिश न बाकी रहेगी कि इस अहद आशुब में मुझको कोई समझता नहीं है. कहाँ है वो जिसके लिए मैं बिना समत का ये सफ़र कर रहा हूँ. कहाँ है मेरे रास्तों का मुसाफिर कहाँ है. एक और नज़्म है, इसका नाम है तीन चेहरों वाला रक्कास, डांसर विद द थ्री फेसेस. मैं जिस लम्हे इस दुनिया में आया था, रात उस लम्हे कड़वे लड्डू थाल में रखकर घर घर बांटने निकली थी. शुक्रिया. मैं जिस लम्हे इस दुनिया में आया था, रात उस लम्हे कड़वे लड्डू थाल में रखकर घर घर बांटने निकली थी. शुक्रिया. मैं तो रात का लेपालिक हूँ. रात के सायों ने मेरी पहचान को ढांप रखा है. मेरी ख्वाहिश के आस्थान पे देवी नहीं है, देवता है, जिसके सामने मैं सदियों का वस्ल प्यासा तीसरे रूप में नाच रहा हूँ. शुक्रिया. पाकिस्तान में I don't want to make it too political, but पाकिस्तान में एक वबा चली है कि जो कि सदियों से है कि they take the woman, okay, the weaker are always become weaker. So if you want to be something in this world, don't become weaker. Always try to be strong. Then people will listen to you. Okay? The woman got raped. Nobody listened to them, which I'm very much afraid of. Very much against pedophiles and rapists. Okay? It's such a traumatic experience when a woman gets raped
And a lot of women are there who get raped by their husbands too. But this is a politically motivated rape जिसका नाम है ज़िना बिल जबर के खिलाफ एहतजाज। वीना हयात, ज़रीना अख्तर, रिहाना टवाना के लिए बचपन से सुनते आए थे, नफरत प्यार का दूसरा नाम है। दुश्मन दोस्ती होते हैं, साबर लोग खुदा के साथी हैं, हर एक इंसान अक्स खुदा है। चाहे जुल्म की डोरी जितनी लंबी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है, उसकी इज्जत सब मर्दों पे लाज़िम है। इतनी दुनिया देख के 40 साल के बाद मैं तो बस इतना समझा हूँ, झूठा कौन है सच्चा कौन है ये तो वक्त बताएगा। दुनिया की मंडी में यारो हर एक चीज़ बिकाऊ है, जीत और दौलत के नशे में, बदला लेने की कोशिश में, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सीधे साधे भोले भाले लोग तवायफ हो जाते हैं, जिससे ये नफरत करते हैं उसके साथ भी सो जाते हैं। It's getting too serious, so I go a little bit. Halloween, काले शहर, काली बिल्ली, छोटी सी नज़्म है। Halloween, काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, गोरे शहर की काली बिल्ली सोच रही है मैंने भी तो उसका रास्ता काटा है। काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, गोरे शहर की काली बिल्ली सोच रही है मैंने भी तो उसका रास्ता काटा है। I had a cat who died couple of 3 years ago, which was with me for 11 years, and I cannot even tell you what happened to me. A part of me died with him, and I still love him, and I dearly, dearly love him. And wherever you are, God bless you. जुगनू के नाम, the name of my cat was जुगनू। किसने कहा था जानवरों से प्यार करो? बच्चे खिलौनों से ही खेलते अच्छे लगते हैं, पालतू रखना तो अय्याशी होती है। तुमसे बिछड़े और बचपन की हद से निकले, मुझको तो एक उम्र हुई, फिर भी मैंने अपने अंदर के बच्चे को बालिग होने और मरने से रोक रखा है। बच्चे भी तो घर के पालतू होते हैं, अब तो सब कुछ पास है मेरे, फिर भी ऐसा क्यों होता है जब मैं रात को सो जाता हूँ, एक बिल्ली दरवाजे के बाहर आती है, रात गए रोती रहती है। मुसल्लस त्रिकोण, हम तीनों एक कमरे में रहते हैं, मी, माई लवर एंड इमेजिनरी लवर। We all have imaginary lover. Burden of wedlock is so heavy, it takes 2 to carrying it on, and sometimes 3. हम तीनों एक कमरे में रहते हैं, हम तीनों एक बिस्तर में सोते हैं, हम तीनों एक त्रिकोण के जाविये हैं, हम तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम तीनों फिर भी इकट्ठे रहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं, हम तीनों एक दूसरे का कफन हैं, हम तीनों एक मज़ार में दफन हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये एक छोटी सी है सूरत अंजाली, काज़ब अंजाली। सूरत अंजाली का क्या तर्जुमा किया जा सकता है? सूरत अंजाली प्री एजैकुलेशन, काज़ब अंजाली फेक ऑर्गेज़म। बड़े को झूले में लेटाकर, छोटे के मुंह में छाती देकर, हंडिया में डोई को हिलाते, गैस के चूल्हे की हिद्दत से, रोटी जलने की बू से घबराकर उसने अपना हाथ जला डाला। हंडिया नीच से लग सी गई थी, उसने अभी तक बालों में कंघी भी न की थी, उसके बदन से बासी फूलों जैसी भूसी आने लगी थी। शाम के 6 बजने में सलमान कुछ समझ आ जाए तो अच्छा, उसके बदन से बासी फूलों जैसी भूसी आने लगी थी। शाम के 6 बजने में आधा घंटा बाकी था, अभी तो कितने काम पड़े हैं। उसने सोचा काश खुदा एक औरत होता। अभी तो कितने काम पड़े हैं, उसने सोचा काश खुदा एक औरत होता।
अब्दुल वाहिद के नीचे लेटे, उसकी सूरत अंजाली के वक्त खुद भी गहरी सांसें लेते, वो ये सोच रही थी मैं एक उम्दा अदाकारा हूँ। अच्छा, ये तो थी मेरी नज़में। अब मैं आपको कुछ गज़लें सुनाता हूँ और उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ के तो चला जाऊंगा। आपके सब्र का मैं ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। गज़ल मैं सुनाने देता हूँ। गज़ल के चंद शेर हैं। अज़रा, इजाज़त। बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, खुल के रोलोगे तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, खुल के रोलोगे तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। और शेर सुनिए कि पंखड़ी जितना बचाए चोर झोंकों से उसे, पंखड़ी जितना बचाए चोर झोंकों से उसे, फूल तो जब भी खिला उसकी महक आ जाएगी। और ये सब हम सबका ही अलमिया है और आप भी इसको महसूस करेंगे। आज भी मुझको ये लगता है कि अगले मोड़ पर, आज भी मुझको ये लगता है कि अगले मोड़ पर जिस पे एक पीला मकान था वो सड़क आ जाए। शुक्रिया। आज भी मुझको ये लगता है कि अगले मोड़ पर जिस पे एक पीला मकान था वो सड़क आ जाएगी। और शेर सुनिए, कुछ नहीं समझेगा कोई लाख तुम कोशिश करो, कुछ नहीं समझेगा कोई लाख तुम कोशिश करो, जब दिलों के दरमियान दीवार शक आ जाएगी। शुक्रिया। कुछ नहीं समझेगा कोई लाख तुम कोशिश करो, जब दिलों के दरमियान दीवार शक आ जाएगी। और मकता है कि रोज मिलना भी नहीं अच्छा। शबाना जी, आपके लिए कहाँ हैं आप? वही जाना था। शबाना जी, ये आपके लिए, आप जहां भी हैं खुदा आपको खुश रखे। रोज मिलना भी नहीं अच्छा नसीम उस शख्स से, रोज मिलना भी नहीं अच्छा नसीम उस शख्स से, वरना एक दिन तुझ में भी उसकी झलक आ जाएगी। रोज मिलना भी नहीं अच्छा नसीम उस शख्स से, वरना एक दिन तुझ में भी उसकी झलक आ जाएगी। मैं आपको दो दो तीन तीन शेर सुनाता जाता हूं ताकि अब वक्त भी बहुत हो रहा है। वैसे तो जवाहर में वो तुलने नहीं देता, वैसे तो जवाहर में वो तुलने नहीं देता, लेकिन मुझे मिट्टी में भी रुलने नहीं देता। वैसे तो जवाहर में वो तुलने नहीं देता, लेकिन मुझे मिट्टी में भी रुलने नहीं देता। एक उम्र भी रोने से पिघलती नहीं आंखें, एक उम्र भी रोने से पिघलती नहीं आंखें, पत्थर को ये पानी कभी घुलने नहीं देता। एक उम्र भी रोने से पिघलती नहीं आंखें, पत्थर को ये पानी कभी घुलने नहीं देता। सब एक से होते हैं तो मैं सबसे अलग क्यों, सब एक से होते हैं तो मैं सबसे अलग क्यों, ये राज वो मुझ पर कभी खुलने नहीं देता। सब एक से होते हैं तो मैं सबसे अलग क्यों, ये राज वो मुझ पर कभी खुलने नहीं देता। सरगर्मे सफर ही मुझे रखता है हमेशा, सरगर्मे सफर ही मुझे रखता है हमेशा, मिट्टी मेरे पाँव से वो धुलने नहीं देता। सरगर्मे सफर ही मुझे रखता है हमेशा, मिट्टी मेरे पाँव से वो धुलने नहीं देता। और आखिरी शेर है, कट जाऊं जमीन से ना उड़ानों के नशे में, कट जाऊं जमीन से ना उड़ानों के नशे में, ये खौफ ही शाह पर मेरे खुलने नहीं देता। हाँ, आहूजा साहब भी बैठे हुए हैं। चंदर आहूजा साहब मेरे बहुत मोहसिन हैं। He actually saved my life and Javed was about to kill him. He said, "You are the one." Actually, I need, when the first time it dawned at me that I am not going to be out of this, you call it
web of homosexuality, which I thought it was a web, I went berserk. It was a disco era, it was early 70s. I drank, I smoked dope, I did everything to help. God, you know Gladys Knight and Pip's song, Lord is so sad to be alone, help me make it through the night. So I did everything to make it through the night. So I found out, no, there's no way this night is never going to end. So what happened, among all it was like a giant leap, Nijinsky's giant leap. So I took that giant leap and called Chicago Mental Health Association, because I was insomniac, I couldn't sleep, I was paranoid, I was thinking of all kind of crazy things, that somebody's going to come and kill me and all those kind of things. I just can't. So the best thing ever happened to me was to call that number, and I called, and it's like answered prayer, and I met Mr. Ahuja. Chandranath Ahuja, please. And with his therapy and his guidance, all those years, I am where I am now, good or bad, Because Riyad Majid के मेरा एक दोस्त है, उसका शेर है, तुझको इतना कुछ बनाने में मेरा भी हाथ है, मुझको भी तो देख, मैं भी तेरे पस मंजर में हूँ. तो ये मैं ये आपको एक गज़ल सुनाता हूँ. तेरा है काम कमा में इसे लगाने तक, तेरा है काम कमा में इसे लगाने तक, ये तीर खुद ही चला जाएगा निशाने तक. तेरा है काम कमा में इसे लगाने तक, ये तीर खुद ही चला जाएगा निशाने तक. मैं शीशा क्यों ना बना, आदमी हुआ क्यों कर, मैं शीशा क्यों ना बना, आदमी हुआ क्यों कर, मुझे तो उम्र लगी टूट फूट जाने तक. मैं शीशा क्यों ना बना, आदमी हुआ क्यों कर, मुझे तो उम्र लगी टूट फूट जाने तक. गए हुओं ने पलट कर सदा न दी मुझको, गए हुओं ने पलट कर सदा न दी मुझको, मैं कितनी बार गया गार के दहाने तक. गए हुओं ने पलट कर सदा न दी मुझको, मैं कितनी बार गया गार के दहाने तक. तुझे तो अपने परों पर ही एतबार नहीं, तुझे तो अपने परों पर ही एतबार नहीं, तू कैसे आएगा उड़कर मेरे जमाने तक. तुझे तो अपने परों पर ही एतबार नहीं, तू कैसे आएगा उड़कर मेरे ज़माने तक. किया था फैसला बुनियादे आशियाँ का नसीम, किया था फैसला बुनियादे आशियाँ का नसीम, हवाएं तिनके उड़ा लाई आशियाने तक. शुक्रिया. मैं शीशा की इसी शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ. टाइम बहुत हो गया, हमने बंद भी करने हैं, तो ये माफ़ी मैं बाप को बाद में सुनाऊँ. मैं इस शेर के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस, यू आर हियर. मैं इस शेर के साथ, मैं शीशा क्यों ना बना, आदमी हुआ क्यों कर, मुझे तो उम्र लगी टूट फूट जाने तक. नवाज़िश.